Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Century Press and Publishers. Dear students, I hope you are enjoying learning because you have learned so many different things which are very useful. जैसे कि आपने वॉवल सीखे, आपने फोनिक्स सीखे, आपने कुछ एक्टिविटीज़ की. But now let's move to fruits. Yes. आज हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है और हमने कुछ फ्रूट्स के नेम्स याद करने हैं. ओके, सो लुक एट योर पेज एंड टेल मी व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज फ्रूट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव orange. Very good, it's orange. And the next one is apple. Yes. What is the initial sound of apple? It's apple. Very good. Next one is banana. And the other one is peach. What is this? Peach. आड़ू पता है ना आपको? It's peach. And the other one is grapes. Grapes. And it is my favorite fruit, mango. I love mango. Do you love mango? Everyone loves mangoes. Next one is pear. It's green in color and it's so tasty. Okay, sweet little cherries. You know, cherries बहुत मज़े की होती हैं. आपने खाई हैं? खट्टी मीठी सी होती हैं, रेड कलर की होती हैं. So these are cherries. And the other one is strawberry. Strawberry is a very tasty fruit. And you know what? हम strawberries को आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, शेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कस्टर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं. So strawberries are very useful. And the next one is गावा, अमरूद. गावा जो है वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है. जो बच्चे गावा खाते हैं उनका स्टमक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. It's guava. And the other one is watermelon. कितना मज़ा आता है ना जब समर में watermelon आते हैं. It's watermelon. And the next one is peach. Peach कहते हैं आड़ू को. है ना मज़े की फ्रूट्स. आई होप यू enjoyed learning fruits. So आपने मुझे ये भी बताना है कि what is your favorite fruit. Okay? And you have to learn all the names of the fruits. Okay? Take good care of yourself. Allah Hafiz.